we're good to go. Question. Yes. Guys, phones on silent, please. Everyone. चलो रोल है सबका. 1 second. Yeah, I'll speak louder. Yeah, I'll speak. You need to remind me. I'll speak very low. Prabhas, is it possible that you speak Hindi. Next film. Definitely. चलो रोल है सबका. Alright. आपकी पिछली फिल्म साहो आई थी, इसके पहले बाहुबली से आप लोकप्रिय हुए. कैसा महसूस कर रहे हैं? How are you feeling कि अभी आपकी एक और हिंदी फिल्म आ रही है, पैन इंडिया फिल्म आ रही है 5 भाषाओं में? क्या प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म रिलीज होने वाली है? क्या इस वक्त आपके मन में चल रहा है? Yeah, major tension was after Bahubali, Saho. So now the audience, because after Bahubali it was very stressful because we don't know. People have too much expectations. So part 1, Bahubali, we didn't know what is going to happen. After part 2, it was too much of expectation. So Saho, whatever commercially did, and now, and if it is a direct only commercial film, it's very easy, Radhe Shyam. It is commercial with a love story, so little stress, but I think I am very confident about my director and the story. So yeah, let's see. बाहुबली को रिलीज होके कई साल हो चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा हो गए जब फर्स्ट पार्ट आई थी. क्या आपको लगता है कि अभी भी आपको वो उस इमेज के साथ आपको जोड़ के देखा जाता है, बाहुबली स्टार, और वो स्टक हो गया, वो नाम आपके साथ स्टक हो गया है? क्या मतलब उसके बारे में क्या महसूस करते हैं? Yeah, because film almost 4.5 years, Bahubali was there around the country, so that will be there, and I don't mind if they have. But only thing is, I need to give like Saho or Radhe Shyam to show them like I can do something else. So the story is good, so let's see. प्रभास, हर एक्टर को और फिल्म मेकर को ये होता है कि जो भी फिल्म वो बनाए नेक्स्ट वो पहली से ज़्यादा बड़ी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस. सो बीइंग एन एक्टर, कहीं ये प्रेशर हर फिल्म के साथ आया है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की है आफ्टर बाहुबली एंड आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस की जो लार्जर देन लाइफ में बाहुबली में नजर आया था वैसा ही स्क्रीन पे वापस से दिखाया जाए, चाहे कोई भी कैरेक्टर आप कर रहे हो. एक पार्ट ये है, और दूसरा ये आपसे सवाल कि जब ये फिल्म आप कर रहे थे तो ये फिल्म करने में आपके दिमाग में भी प्रेशर था कि बाहुबली प्रभास को आप डायरेक्ट कर रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस के साथ मीट करनी है. So, yeah, so the pressure will be there definitely after Bahubali, but we can't cross every film and next, and where will it go? So that is not the problem. We just want this film to do what we felt for the budgets or the audience, showing audience something in a commercial film, a different style, Radhe Shyam. So we can't cross every film and go further. No, it's impossible, I think. For any actor, it's not possible. So coming back to feeling the pressure and everything, more of we had a responsibility to cater the audience, like with his image and everything. And I was always elated and felt it's a gift to have him on Radhe Shyam and him agreeing and doing the film. So we never felt pressure from the technician's point of view. And it was always about like, see, you can imagine whatever you want to imagine, you can just visualize whatever you want to visualize, because everything with his image, you can cater anything. अगर आप ये फिल्म विदाउट गोइंग टू पास इस पीरियड पे बिना जाए आप बनाते, ये एक सिंपल शायद एक लव स्टोरी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पीरियड में जाके ऑडियंस का परसेप्शन भी चेंज हो जाता है, और एक नया, क्योंकि आपको इन प्रॉप्स, इन सेट्स, आपको सब एक नई दुनिया देखने को मिलती है, नया विजुअल मिलेगा, नया विजुअल देखने को मिलता है. सो अगेन कि ये जब भी कोई इस तरह की दुनिया लोग भी पसंद करते हैं, ये एक वजह है कि ये कहानी कहेगी, ये कहानी आई आपको उस तरह से कि इसको उस तरह से बनाना चाहिए.
See, first thing is like this film or this concept was never imagined in a small scale. So it was always grander, and when I was visualizing or imagining things and everything, it was always big. And once it went to him, it became more bigger and everything. And coming back to that vintage and that 1970s Europe and everything, so whenever you have a possibility of creating something new for the audience, so you have to definitely do that. And like I would like to tell something, like initially we've imagined the story in India, like the vintage in India, like the scale was the same thing. But while we were discussing, like he was the one who was suggesting like nobody in India has saw vintage Europe, so why don't we try it? And from there, like the imagination expanded, and we it was a tough task, like doing everything, And, but we had fun. And one more thing, because of Europe, is like he designed the ship episode climax, which is very beautiful. So India, it was a problem. Yeah. So that was the one more reason we thought like vintage Europe we never saw. This is the first time in Indian cinema. So and that ship episode, it was easier for other country than Indians in India. बट जैसा हम बात कर रहे थे कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स आपने किए, अब क्या आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कैरेक्टर आप करें जो उतना लार्जर देन लाइफ का और रियलिस्टिक के करीब, रियलिटी के करीब हो, और जो कद काठी, क्योंकि आपकी कद काठी देख के भी लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि यार इतना बलशाली आदमी है और इसको हमेशा ऐसे ही किरदार में हम देखेंगे, तो आप सोच रहे हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सब कुछ डिफाई कर दे, आपका पर्सोना, आपकी बॉडी, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? Yeah, in Telugu also I had the same problem. Like from my first film only, they felt I'm an action hero, a commercial hero, and also I tried then also. I did one film called Darling and Mr. Perfect. So it worked really well. If the story is good, I think people will watch. But every film you can't do that. I want to entertain audience in different way as much. This is also a commercial film, but in a different way. Congratulations पूजा जी, फाइनली ट्रेलर जो है आज लॉन्च हो चुका है, एंड हम लंबे टाइम से हम देख रहे थे कुछ ना कुछ क्लिपिंग जो है इस फिल्म से रिलेटेड आ रही थी, बट बीच में कोविड। नाउ व्हाट्स योर फीलिंग कि क्या फील करके आप ट्रेलर लॉन्च हो गया एंड लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला? मतलब खुशी तो हो रही है कि लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, और मतलब फीलिंग क्या है, इट्स जस्ट लाइक अभी जो मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ है हमारा, उसी को मेंटेन करना है अभी, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 दिन ही है, 9 दिन के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आई फील दैट फिंगर्स क्रॉस्ड, हर एक फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, एंड आई होप दैट दिस वन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लव। लोकेशन हमें बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिल रहा है, थोड़ा और स्पेशली ये जो ट्रेन का सीन है, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी जगह में शूट किया है हम लोगों ने। इटली में टोरिनो था, पीसा, जॉर्जिया, where else? We've shot so many places. Yes. We've shot like all over Italy, I would say. Then there was that beach location in Italy. तो इटली में ज़्यादातर शूट किया है हम लोगों ने, एंड जो मतलब इच्छा थी कि वी वांटेड टू मेक श्योर दैट द ऑडियंस सी समथिंग न्यू एंड समथिंग फ्रेश, क्योंकि पीरियड फिल्म है, लेकिन ये जो यूरोपियन पीरियड है किसी ने अभी तक किया नहीं है। सो इंडियन पीरियड बहुत बार देखा है हम लोगों ने इन डिफरेंट लाइक cultures also, Rajasthani Indian, different Indian we've seen period. We haven't seen Italian and we haven't seen a European. तो अगर ये दो Indian, if they are in Italy, so we've kind of like made sure that we've covered a lot of like beautiful locations in Europe. प्रभास, एक सवाल और था, हिंदी सिनेमा की जब बात हो रही है, आपकी फिल्म हिंदी में भी आ रही है, मैं जानना चाहूँगा कि आप हिंदी सिनेमा को कितना फॉलो करते हैं, कौन कौन से स्टार्स की फिल्में आप देखते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जब अल्लू अर्जुन आए थे तो उन्होंने बताया था अमिताभ से लेकर तमाम स्टार्स के वो फैन हैं, आप किसके फैन हैं और किनके साथ काम करना चाहेंगे आप? एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब ने लिखा आपने बहुत खाना खिलाया उनको, ऐसे क्या था कि इतनी तारीफ उन्होंने की, क्या खिलाया? No, problem is to send vegetarian बहुत problem है. So anyway, if I want to see Deepika or anyone, I'll send lot of varieties, so I don't know what they like. So Amitabh sir को
थोड़ा ज़्यादा अमिताभ सर he told like army उतना नहीं but I send a lot of vegetarian food. So sending vegetarian food is a big problem for me and my family. Non-vegetarian we are हाल ही में आपने मेरा पहला शॉट दिया था क्या हाउ वाज इट वर्किंग विद अमिताभ बच्चन what an sir. He's not normal. He's someone else. I'll talk about that later. What an experience. बट उनका भी यही ख्याल होगा आपके बारे में. No. He's Amitabh sir. He's very happy with you. Yeah, but I'm very happy that he's happy. But I was like waiting, sir, Amitabh. I was calling Nagi and said, please, one shot, please, let me do one shot with him. Even the smallest shot is okay. Don't give me a big shot because I get stressed. So it's amazing. What about the first part of my question कि आप कौन-कौन सी फिल्में Yeah, we watched a lot of films in Hyderabad. It's normal, like Amitabh sir, Salman, Shah Rukh, everyone. We watch every good film. और किसके साथ काम करना चाहेंगे अगर बॉलीवुड की बात करें Yeah, all the great actors. You can name. I don't know like that, but yeah. My dream was to work with Amitabh sir. I did work. That's the biggest thing. पूजा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रभास की आपने दोनों बाहुबली देखी हो तो जब आपको ये फिल्म करने के लिए जब आप फर्स्ट शॉट या जब आप इनसे मिले होंगे तो व्हाट वाज योर फीलिंग एग्जैक्टली वर्किंग विद प्रभास? I mean, he's a very big star. Bahubali, I feel, opened a lot of doors. It crossed and kind of, broke a lot of barriers. And then to do this film, I was very excited. Or I was more excited that Bahubali ke baad, to do a love story. It's a risk that like not everybody would take, But एक्शन भी किया तो साहू. of course, Saho भी था, लेकिन I got narrated Radhe Shyam before Saho released, so I'm talking about that time. But to do a film like this is like, बाहुबली देख चुके थे आप? of course, किसने नहीं देखा है? So yeah, so I was very. One of my actors didn't see Bahubali. I won't tell her name. Yeah, so I mean, to do a love story, it's like a very fresh thing, so I was very excited about that. प्रभास जी कोई ऐसी पर्सनालिटी है कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसका हाथ देखना चाहेंगे आप हैं जिसका फ्यूचर के बारे में बताएंगे कोई ऐसी इच्छा होती है आपकी आपने बताया कि मिस्टर बच्चन के साथ में आपने काम किया सलमान शाहरुख के आपने बताया कि फैन क्या इनका हाथ देखना चाहेंगे एंड इनका फ्यूचर कुछ I don't know. Then I think I should learn a lot of it. Yeah, I don't know. It's a lot of science. It's very interesting when I learned about palmistry, about the very interesting news. Jagpal Babu sir said something, and it's very interesting. But I don't know. I can't read. ये सवाल आप तीनों से कोई भी जवाब शुरू कर सकते हैं. जब आप कब फिल्म बनाते हैं या डब करते हैं, जब आप पैन इंडिया फिल्म बनाते हैं, उतना आपने सुना कि आप एक ही सीन को 2 अलग भाषा में 3 अलग भाषा में बतौर डायरेक्टर एंड बतौर हर एक ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है. चाहे हम एक्टिंग की बात करें, चाहे हम स्क्रिप्ट की बात करें, चाहे हम ट्रीटमेंट की बात करें, आप बताना चाहेंगे कि पैन इंडिया फिल्म में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और वो कितना टायरिंग है? Definitely, it's very tiring for the actors. And coming back to like doing the same thing twice or thrice, it's like when you have two interesting characters and they are saying dialogues or they are emoting something. The shot, you look at the shot like either you feel it or you don't feel it. When you feel it, that is okay. So to bring that again and again, it's a very tiresome task for the actors. Like they are going through the same emotion and repeating the same emotion is very difficult, and maintaining the same meter and everything. So it's like I think they need to answer like what went in their minds. I mean, I also feel कि जो शब्दों में जो मैजिक होता है ना, वो अलग बात है. मतलब अगर हम वो ही लाइन हिंदी में बोलते थे तो जो रिएक्शन जो आता था अलग आता था कंपेयर टू द तेलुगु लाइन्स. सो आई ऑलवेज फील लाइक कभी कभार जब मैं डब कर रही थी, क्योंकि मैंने दोनों तेलुगु और हिंदी में डब किया, तो मुझे ऐसे लगा कि अरे ये शॉट ना ये लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऐसे हिंदी में नहीं आया या फिर ऐसे तेलुगु में नहीं आया.
So I feel like they're very different. They're one film, but they're two different energies. And क्योंकि बहुत से there are words which are so beautiful. Like अगर हम मन्नत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो विश इतना रोमांटिक और पोएटिक नहीं है. So I feel like words have magic, so they have their different energies, and that's what we play on. And like he said, you have to feel the emotion. And it's been a challenge for sure. Like I said कि हम करते थे, एक हिंदी वाला ख़त्म हो जाता था और फिर तेलुगु बोलना पड़ता था. बट आई ऑल्सो थिंक कि हम ये पैन इंडिया, आपका जो क्वेश्चन था, आई फील लाइक स्क्रिप्ट पैन इंडिया होना चाहिए और इमोशन पैन इंडिया होना चाहिए. फिर बाकी का वेदर टू कि ये हिंदी के लिए ठीक रहेगा कि नहीं, या नहीं ये इंग्लिश तेलुगु के लिए ठीक रहेगा कि नहीं, वी डोंट रियली थिंक दैट. आई मीन इफ़ यू थिंक बाहुबली was in one language, but it kind of connected with so many people because the subject. We did Tamil and Telugu same. And Tamil and Telugu, yeah. And dubbed also, you all dubbed a lot. Yeah. So yeah, I'm not very good with many takes normally. So and I don't know. This Rajamouli gave me Bahubali, and I don't know, for every film I need to dub. I mean, shoot like every scene minimum 2, 4, 8, 6. And I told Radha, please let first 2 takes finish one language. And when like in very good, if you feel like sometimes you feel, oh wow, I got the emotion right, and like I'm reviewing the clothes or dress and they said no, there's another language. We always forget. I still forget till day. And like, okay, Hindi ho gaya, finish ho gaya, emotion acha hai, I felt it nice, and I said Telugu. Okay, now Telugu ho gaya, Hindi, oh shit. It's tough in some scenes. It's very tough. I think emotion and comedy scenes, I think timing, it's tough for actors, it's tough. And even for the directors, I feel, because even for them, it is like, it's tough, I feel, do 2, 3 languages or 2. Like from the beginning, we've considered that like we are doing 2 films. जैसे एक फिल्म को खत्म होने में 35-40 days का टाइम, 45 days लेते हैं, इसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है मैंने शूटिंग इन 2 लैंग्वेज. Down south, we don't finish films in 45 days. Normally, it takes more than 100 days for a single language. Yeah. And for this one? This one, it happened like I think more than 150 days. Yeah, I didn't know. Yeah, even I didn't know. Because of the long stretch we had. But I think what was funny that used to happen is sometimes I would be like कि पहले हिंदी कर लेते हैं तो मूड में आ जाएंगे, because that's what I know, right? So we used to do. मैं पहले तेलुगु कर लेता हूँ, मैं मूड में. हाँ, मतलब we would always like figure out which one, and I think sometimes you also कभी कोई ऐसा होता था कि तेलुगु पहले खत्म कर लेते हैं ताकि so it used to also be that. Yeah, I asked Shraddha or Pooja, like whatever you're comfortable, do it, because they come from suddenly, like for her it's okay, she's already done Telugu. So I used to ask Shraddha, like whatever comfortable, I'll do it, don't worry. She's like, no, I want to finish Telugu first. So what used to happen was sometimes we would do the thing in Hindi and we're like, okay, ठीक है, अच्छा है, तेलुगु करना है. जब तेलुगु करते थे तो I thought कि थोड़ा और time लगेगा to get the right take, and suddenly like the words would just flow क्योंकि हम इतना सोचते नहीं हैं, हम बस बोल देते lines. So like I feel like it was a very eye-opening experience. Like in Adpurush, Om felt like Telugu is good. I said that is because it's a new language for you, you're feeling it interesting. First, because when the directors feel it, like for him it might be Hindi, for me it might be Hindi more interesting, for her it might be Telugu more. For Shraddha, Telugu was always interesting because it's a new language, you get new energies. Yeah. प्रभास चूंकि एक रोमांटिक फिल्म है, आपका जो लुक है पूरा रोमांस से भरा हुआ है, प्रभास के लिए रोमांस क्या है? Oscar romance. I think, yeah, if I'm not romantic, I wouldn't have accepted Radhe Shyam, I think. I think a lot of things are romantic. Ajay Prabhas, earlier before Bahubali, we used to Google about South actors. तो जिसमें ये लिखा हुआ रहता था कि Prabhas is a South Indian actor. लेकिन now post Bahubali, it is mentioned Prabhas is an Indian actor. तो मतलब कितना कुछ इससे रिलेटेड बदला है, क्योंकि बाहुबली के बाद अभी पूजा ने कहा कि डोर खुल गए हैं, दरवाजे खुले हैं. तो क्या आप इसका पूरा श्रेय आप अपने ऊपर लेते हैं या फिर पूरी बाहुबली की टीम या फिर कुछ ऐसा, अगर कुछ बताना चाहें? So the
problem happened to me is I am like an experiment tube. Like for example, Saho was so much stress. So I don't know. People say like with even the friends who want my film to be like commercial film with a new director, second film, such a big budget, will it work? There are like so many questions for almost 8 years for me, everywhere. Now Radhe Shyam, a love story, why? You can do a commercial film, it's easy for you. I like, yeah, but I don't know, it's like from last 8 years, Bahubali 1 was a big question, 2 was little relaxing because around the country they like, but we don't know how much, like it was too big too. So again, Saho was a question mark, like what to do. Then again, Radhe Shyam, like the question. So I think from 8 years, I'm in experiment research center. आपने Sorry guys, we'll take one last question. One last question, ये please. पूजा आपने ऋतिक के साथ मौजूदा में काम किया था, फिर तमाम साउथ के बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, अभी भी कर रही हो। थलापति विजय के साथ भी आपने काम किया, अल्लू अर्जुन के साथ भी, अब सलमान और रणवीर के साथ काम करने की चर्चा हो रही है। हाल ही में दबंग टूर में भी आप नजर आई थी, कुछ बताएंगे सलमान और रणवीर के साथ काम करने के लिए? रणवीर के साथ फिल्म शूटिंग खत्म हो गई है, मतलब वी रैप्ड ऑन सर्कस। क्या बताओ, ही इज़ लाइक अ एनर्जी बॉल, ही इज़ लाइक वेरी एक्साइटेड, एंड रोहित शेट्टी एंड रणवीर टुगेदर, इट्स लाइक अ नेक्स्ट लेवल एनर्जी ऑन सेट। बहुत मतलब आई फील लाइक कि वो सेट मेरा वेकेशन था। लाइक ऐसे नहीं लगा कि हम शूट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस भी नहीं था, बस लाइक बनते बनते बन गया, मतलब हम वी वर जस्ट हैविंग फन एंड पिक्चर बन गई। सो इट वाज लाइक दैट। सो आई फील लाइक दोज आर द काइंड ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ऑडियंस को वो आई फील वो पल्स एंड दे फील आर एनर्जी, यू नो। सलमान ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड। दबंग टूर तो काफ़ी आई मीन लोग कह रहे थे कि लाइक द केमिस्ट्री इज़ गुड, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वो भी इट्स लाइक अ लव स्टोरी इन अ वे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। He is a very real person, Salman, so I think it's great. I'm looking forward to work with him. Start होगा अभी तो तब बात करेंगे उसके बारे में। प्रभास, एक लास्ट चीज मैं पूछूंगा, सबने आपके बारे में पूछा कि प्रभास का के साथ काम करना कैसे लगा, पूजा के साथ जब आपने काम किया आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? Yeah, Pooja, I think Radhe Shyam, like we had a lot of discussion and all for who's going to be the love story and all. We all thought like Pooja is the best, and I think she did an extraordinary job for Radhe Shyam. No doubt about it. Fingers crossed. Thank you guys. हाँ, एक सेकंड, नहीं, इसको पकड़ कैसे है सर? नवीन, बस ऐसे आप बताइए। एक सेकंड।